2 Delhi markets were closed, have been closed till the 6th of July for violating COVID-19 norms. We are currently in West Delhi's Nangloi area. 2 markets of this area, the Punjabi Basti as well as Janta Market, have been shut down by the administration because COVID appropriate norms were not being followed. According to the administration, social distancing rules were being flouted by both the public as well as shopkeepers, and nearly 400 shops have been closed till 6 July to prevent these places from becoming COVID hotspots. But traders feel this is unfair. चालान कटते हैं जो अभी उसके बीच में 2 चालान हमारे वैसे भी कट चुके हैं दुकान के 2-2 हज़ार के चालान कटते हैं, तो उसमें इतनी भीड़ तो हमारी होती भी नहीं। हमारी 50 गज की दुकान है, 50 गज की दुकान में एक बार बताओ क्या कस्टमर 4-5 भी नहीं खड़े हो सकते, और उसमें पुलिस वाले आके बोलते हैं कि आपकी दुकान के अंदर भी जो स्टाफ है वो भी 4-5 जनों का है। अब बताओ, अब एक जना खड़ा होकर कस्टमर अटेंड करेगा, क्या करेगा? उसके में हम ये जानना चाहते हैं हम लड़कों की तनख्वाह कैसे देंगे। While action has been taken on some markets in West and East Delhi, other bigger markets like South Delhi's Sarojini Nagar continue to witness overcrowding and improper masking, a lethal situation in the midst of fears of an impending third wave of COVID. Traders claim they try to ensure rules are followed, but customers on the other hand seem to be unconcerned. हम लोग कस्टमर को बोल देते हैं जी अगर आप 4 लोग हो 2 लोगों को देखना, 2 लोग देखिए, बाकी लोग दूर दूर थोड़ा खड़े हो जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क नहीं लगाते हैं। अगर कोई कस्टमर आया तो उसको बोल देते भाई मास्क लगा के रखो। रूल स्टिक करेंगे फिर भी मार्केट में आप भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, जहाँ तक मुझे लगता है। और आपको अनसेफ फील होता है इस तरह से आप शॉपिंग करने आते हैं? होता तो है, बट शॉपिंग भी तो करनी है ना, कैसे करें बताओ। According to sources in the Delhi Disaster Management Authority, markets like Sarojini Nagar, Kamla Nagar and Sadar Bazaar have already been issued notices last week about overcrowding, and if things don't change, stricter action may follow. From tomorrow, Delhi will unlock further as stadiums and sports complexes will be allowed to reopen but without spectators. So far, they were allowed to open only for holding national and international events and training sports persons for such events. Cinema halls and multiplexes will continue to remain closed in Delhi. A lot of people think that this is the time to come out before the third wave strikes, but it is scenarios exactly like these that are going to invite the third wave. In New Delhi with camera person Mohammad Mursalin, this is Sukirti Dwivedi for NDTV.